Good morning, everyone. Myself, Boyd Mishra. Today, we will discuss about the chapter number 11, Geography. Your book is Fundamental of Physical Geography, class number 11, chapter number 10. Okay. Your chapter is Atmospheric Circulation and Weather System. Students, in this chapter, we will discuss about vertical variation pressure, atmospheric pressure, horizontal distribution of pressure, word distribution of sea level pressure, factors affecting the velocity and direction of the wind, frictional forces, Coriolis forces, pressure and winds, and so on. Okay, so shall we start? The weight of column of air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called atmospheric pressure. Okay? Atmospheric pressure क्या होता है बेटा? The weight of column of air contained in a unit area from mean sea level to the top of the atmosphere. ये कहलाता है आपका atmospheric pressure. Atmospheric pressure is expressed in the unit of millibars. एटॉमिक एक्सप्रेशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका वो बेटा एक्सप्रेस होता है यूनिट्स ऑफ मिलीबार में. एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 millibars. Due to gravity, the air at the pressure is denser and hence has higher pressure. Air pressure is measured with the help of a mercury barometer or the aneroid barometer. The pressure decreases with height at any elevation. It varies from place to place, and its variation is the primary cause of air motion, that is wind, which moves from high pressure areas to low pressure areas. Okay students, फिर आता है vertical variations of pressure. In the lower atmosphere, the pressure decreases rapidly with height. Height बढ़ाती जाती है तो pressure कम होता जाता है. The decrease amount to 1 millibar for each 10 meter increase in the elevation. 10 मीटर बढ़ने पर 1 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. ओके, तो टेबल 1 में हम स्टडी करते हैं. जैसे सी लेवल है तो उस पर आता है प्रेशर जो है मिलीबार्स में आएगा 1.013.25 मिलीबार्स और आपका टेम्परेचर होगा 15.2 डिग्री सेल्सियस. अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो फिर रह जाएगा आपका प्रेशर 898.76 मिलीबार और टेम्परेचर हो जाएगा 8.7. 5 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएँ ज़मीन से तो वो आ जाएगा प्रेशर रह जाएगा आपका 540.848 प्रेशर इन मिलीबार्स एंड टेम्परेचर हो जाएगा -17.3. और 10 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले जाएँ ग्राउंड लेवल से अर्थ के तो फिर आ जाता है 265 प्रेशर रह जाता है और टेम्परेचर हो जाता है -49.7. द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेज इज मच लार्जर देन द हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट, but it is generally balanced by a nearly equal but opposite gravitational force. Horizontal distribution of pressure क्या होता है? Horizontal distribution of pressure is studied by drawing isobars at constant level. हम क्या करते हैं, isobars की 2 लाइनें बना लेते हैं एक constant level पर. isobar the line connecting places having equal pressure. isobar वो लाइन होती हैं जो उन जगह को जोड़ती हैं जहाँ पर इक्वल प्रेशर होता है. In order to eliminate the effect of altitude and the pressure, इसमें altitude और effect of का प्रेशर जो होता है, प्रेशर पर जो पड़ने वाला प्रभाव वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है. It is measured at any station after being reduced to sea level for purpose of comparison. The sea level pressure distribution is shown on weather maps. ठीक है. अब जैसे 10 पॉइंट फिगर दिया गया है, shows the pattern of isobar corresponding to the pressure system. Low pressure system is enclosed by one or more isobars with the lowest pressure in the center, and high pressure system is also enclosed by the one or more isobars with the highest pressure in. Okay, one or more isobar
सेंटर। फिर क्या होता है, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल। जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल है वो प्रेशर इन जनवरी एंड जुलाई हैज़ बीन शोन, दिखाया जाता है। नियर द इक्वेटर सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। Along 30 degree north to 30 degree south, found the high pressure are known as the subtropical high. Further polewards, along 60 degree north and 60 degree south, the low pressure belt are termed as the subpolar lows. Near the poles, the pressure is high and it is known as the polar high. These pressure belts are not permanent in nature. Force affecting the velocity and direction of the wind. The air is set in motion due to the differences in atmospheric pressure. The air in motion is called wind. The wind blows from high pressure to low pressure. Addition, rotation of the earth also affect the wind movement. The force exerted by the rotation of the earth is known as Coriolis force. I repeat, the force exerted by the rotation of the earth is known as Coriolis force. ठीक है, ये डायग्राम दिया गया, उसमें दिखाया गया है, देखो। ओके, द हॉरिजॉन्टल विंड लाइन्स नियर द अर्थ सरफेस रेस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस। कौन कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, विंड लाइन जो होती है नियर द अर्थ सरफेस रेस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस सच एज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, नंबर 2 द फ्रिक्शनल फोर्स, और नंबर 3 कोरियोलिस फोर्स। In addition, the gravitational force act downwards. Okay. तो इस डायग्राम में प्रेशर ग्रेडियंट दिखाया गया है। द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोड्यूस ए फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग। प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग होता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं? इट अफेक्ट द स्पीड ऑफ विंड, फुल स्टॉप। It is the greatest at surfaces and it influences the generally extent up to an elevation of 1 to 3 kilometers. Coriolis forces क्या होती हैं वो देख लेते हैं। The rotation of the earth about its axis affect the direction of wind. This force is called Coriolis force after the French physicist who described it in the 1844. It deflects the wind to the right direction in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. The deflection is more when the wind velocity is high. The Coriolis force is directly proportional to the angle of latitude. It is maximum at poles and is absent at equator. The pressure gradient force is perpendicular to an isobar. The higher the pressure gradient force, the more is velocity of the wind and the larger is the deflection of the in the direction of wind. As a result of these two forces operating perpendicular to each other in the low pressure areas and the wind blows around it, the low pressure get filled instead of get intensified. That is the reason why tropical cyclones are not formed near the equator. Okay, so this is today's end of today's topic. I hope you will enjoy, and all the students of class 11th learn these notes and send me to my WhatsApp number and learn your examination